समस्त को स्वागत करुचे। आज आम यूपीएससी प्रिलिमिनारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करवा 2011 और 2012 रो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करवा। ओके, वीडियो को स्किप करंतु नहीं। आज आम जो क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करवा से सब आमर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल हो पार। ओके, चलतु फर्स्ट क्वेश्चन देखना। Consider the following statements. First one, biodiversity is normally greater in the lower latitude as compared to the higher latitude. Second statement देखो, along the mountain gradient, biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude. दीटा जाक स्टेटमेंट सिमिलर अच्छी ओनली ये जो लैटिट्यूड आउ अल्टीट्यूड ये दुटा वर्ड सह खेली। ओके, कौन कहूँ ना बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड। जदि आम गोटे माउंटेन को देखिया यहाँ है तार लोअर लैटिट्यूड, यहाँ जब मुझे 0 डिग्री धरनेबी 0 डिग्री 1 डिग्री लैटिट्यूड then 10 degree latitude, this is 50 degree latitude. Okay, biodiversity is normally greater in the lower latitude. ये जो lower latitude अपन मान देखि पाथबे ये एरिया रे हमें higher latitude comparison रे अधिक biodiversity देखिया पाइबा। ओके, the biodiversity normally greater in the lower latitude as compared to the higher latitude. Then also the next statement, along the mountain gradient, biodiversity is normally greater in the lower altitude. Altitude means height. Okay, altitude means height. ये जो height रे हमें जदि देखिया ये altitude रे, okay, तो biodiversity एठी मध्य अधिक हमें देखिया पाइबा as compared to the higher altitude. Okay, तो दुटा जाक स्टेटमेंट पूरा करेक्ट अच्छी कहीं जदि आम ये जो बेसमेंट रीजन बा लोअर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड कथा कहबा वी हैव इकोसिस्टम डिफरेंट इकोसिस्टम like terrestrial and aquatic ecosystem. In terrestrial ecosystem we have a forest, then grassland ecosystem, then desert ecosystem, and in aquatic ecosystem we have marine ecosystem, freshwater ecosystem, saltwater ecosystem. Okay, तो यही सब पई हमें जो लोअर लैटिट्यूड एवं लोअर एल्टीट्यूड रे अधिक बायोडाइवर्सिटी देखिया पाइबा एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड. ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ओके, तब देखंतु the number question. Three of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region as hotspots of biodiversity. देखंतु वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा ये सब हेले आमर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया. ओके, ता सहित सुंडा लैंड भी गोटे अच्छी. ओके, सुंडा लैंड ये सब हेले आमर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो देखो बायोडाइवर्सिटी गोटे एरिया को आम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने दुटा क्राइटेरिया अच्छे. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1500 vascular plant as endemic. ओके, नेटिव प्लांट स्पेसीज रहिबा दरकार 1500 vascular plant species as endemic. Okay, it is the first criteria. Then second criteria is it must have 30% or less of its original natural vegetation. Means 30% vegetation रहिबार अछि से जगार ता सहित 1500 प्लांट स्पेसीज एंडेमिक प्लांट स्पेसीज. ओके, तो तेबे जाई आमे से जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली डिक्लेयर कर परबा. तो देखंतु ये जो कहिछि वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एटा को आमे को क्राइटेरिया द्वारा गोटे
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली रिकॉग्नाइजेशन करवा ओके तो देखंतु जो फर्स्ट स्टेटमेंट मु कहली बा क्राइटेरिया इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 vascular plant species तो ये जिनस को ये क्राइटेरिया को से फर्स्ट ऑप्शन फुलफिल करछि बा क्वालिफाई करछि स्पेसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म फर्स्ट क्राइटेरिया अनुसार हमरो स्पेसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म करेक्ट होछि एंड जो सेकंड क्राइटेरिया अछि इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन ये क्राइटेरिया को बा ये क्राइटेरिया अनुसार हमरो फिफ्थ ऑप्शन टा थ्रेड परसेप्शन एटा करेक्ट होछि ओके सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन सी 1 3 एंड 5 ओके जदि आम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विषय बेसी किसी जानवा ताल देखो ऑल ओवर वर्ल्ड रे टोटल 36 टी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रही ओके आम इंडिया रो वेस्टर्न घाट श्रीलंका इंडो बर्मा रीजन तापर है सुंडा लैंड ओके सुंडा लैंड यहाँ भी आमर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसनु क्वेश्चन नंबर 3 biodiversity form the basis for human existence in the form or in the following way human existence में biodiversity कौन सब basis शेयर करे ओके देखो soil formation preservation of soil erosion recycling of waste pollination of crops ये सब जिनस आमर biodiversity शेयर करे ओके for human existence so the right answer is option D all the points are correct okay then question number 4 which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora flora means plant species fauna means animal species okay तो पचार कौन which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora not a in situ method okay in situ method को गुडा ना in situ बोली कहले हम कौन बुझे ना protection of animal within their natural habitat in situ method of conservation focus protection of animal within their natural habitat किंतु ex situ रे कौन हुए ना animal मानू तांगरो natural habitat बाहर protect करा जाए ओके आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट तो ये देखो इनस्टिट्यूट एग्जांपल गुड़ाक इनस्टिट्यूट जो मेथड ऑफ कंजर्वेशन रही से सब बेले आमर बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन मराइन प्रोटेक्टेड एरिया बट नॉट ए इनसिटू बा नॉट ए साइट फॉर इनसिटू मेथड बोली कही तो द राइट आंसर इज बोटानिकल गार्डन ओके बोटानिकल गार्डन आमर एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ओके एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन बोटानिकल गार्डन तापर है आमर जू जू मध्य एक्स सिटू कंजर्वेशन अंडर आसुची तापर जीन बैंक ओके जीन बैंक ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो वल्चर ब्रीडिंग काउ ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग ये सब जी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स देन जू बोटानिकल गार्डन जीन बैंक ये सब आमर एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन बट इन सिटू है आमर बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके सो द राइट आंसर इज botanical garden which is a ex situ method of conservation not in situ method of conservation okay then question number 5 among the following states which one has the most suitable condition for the cultivation of large variety of orchid with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field arrow right answer option B that is Arunachal Pradesh next question number 6 देखो a sandy and saline area is the natural habitat of Indian animal species the animal has no predator
in that area, but its existence is threatened due to the destruction of habitat. Which one of the following could be that animal? ଏ ଚାରିଗୋଟି ଆନିମାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆନିମାଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଯାହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ୍ ହେଉଛି sandy and saline area. ଓକେ, ତ ଏଇ ଚାରିଗୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ଆନିମାଲଟା କୋଉ ଆନିମାଲ? ଓକେ, ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରିଡେଟର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିଡେଟର ମିନ୍ସ ଲାୟନ, ଟାଇଗର, ଦେନ୍ ଭଲଚର, ଏସବୁ ସୁପର ପ୍ରିଡେଟର ଗୁଡ଼ାକ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥ୍ରେଟେନ୍ରେ ଅଛି। ଓକେ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ destruction of habitat or habitat loss। ତ ସେଇ ଆନିମାଲ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିଲ୍ଡ ଆସ୍। ଓକେ, ତ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ destruction of habitat ବା habitat loss ହେବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା exotic plants। ଓକେ, exotic plants, exotic plants means invasive plants or foreign plant species जोटाकि टॉक्सिक इन नेचर, माने पॉइजनस प्लांट्स गुड़िक। ये प्लांट्स गुड़िक कौन करती ना, ये जो इंडियन विल्डर्स जो एरिया रे रोचंती से एरिया रो नॉर्मल ग्रास गुड़िक ग्रो होगा सप्रेस करचंती। ओके, माने ये एक्जोटिक प्लांट्स गुड़िक अधिक मात्रा रे ग्रो करचंती, जा फल रे आंकर जो नॉर्मल ग्रास गुड़िक अच्छे खाया पे से सब ग्रो हो पारनी। ओके, so these exotic plants are not reliable food source for Indian wilderness। ओके, तापर आम देखिए आहरी अलग रीजन सब अच्छी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पे। तो फास्ट है एक्जोटिक प्लांट स्पीसीज, जदि आम एग्जांपल देखिए ब्रोमेलिएड। ओके, ब्रोमेलिएड, ऑर्चिड, देन लांटाना कैमेरा। ओके, केक्टी, केक्टी आम डिजर्ट एरिया देखा पाइबा। तो यही सब हेल्ले आमर एक्जोटिक प्लांट स्पीसीज रो एग्जांपल्स। ओके, सेकेंड जिनस है आमर डिफेन्स एक्टिविटी। ओके, किसी डिफेन्स एक्टिविटी से एरिया रे जो एरिया रे आमर विल्ड आस गुड़ाक रुहंती। ओके, तापर देखंतु ये जो एरियाटा सालाइन नेबा द्वारा ये सल्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है। ओके, सल्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ओके, सल्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है जहाँद्वारा आंकर हैबिटेट लॉस हो जाउछि। राइट, तो यार राइट आंसर इंडियन विल्डर्स कोडी आमे देखा पाइबा ना रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ओके, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात, एटा गोटे आंकर जो IUCN स्टेटस जदि देखिए नियर नियर थ्रेटेन्ड स्पीसीज, नियर थ्रेटेन्ड स्पीसीज। आउ इंडियन विल बफलो, दिस इज स्टेट एनिमल ऑफ CG। ओके, छत्तीसगढ़ रो स्टेट एनिमल ये आउ आंकर जो IUCN स्टेटस रही, दिस इज ए एंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, एंडेंजर्ड स्पीसीज। तापरे ये जो इंडियन विल्डर्स याकू गुजखोर मध्य कहती। ओके, जो अनदर नेम इट ऑल्सो नोन एज गुजखोर and also called Indian onagar in local Gujarati language। Okay, Indian wild boar, it is also known as Andamanese pig। Okay, this Indian wild boar also known as Andamanese pig। Right, आंकर जो IUCN स्टेटस रही सेटा लिस्ट कंसर्न। ओके, लिस्ट कंसर्न एटार मध्य लिस्ट कंसर्न। ये इंडियन गजेल आम नॉर्थ वेस्ट रीजन बा राजस्थान रे आम देखा पाइबा। ओके, आउ इंडियन विल्ड बफलो स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़
ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିଲ୍ଡ ଆମେ ଗୁଜରାଟର ଲିଟିଲ୍ ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିଲ୍ଡ ଆସ୍। ଓକେ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। The red data book published by the International Union for Conservation of Natural and Natural Resources contain list of देखो red data book कौन करे। red data book keeps record of endangered plants and animal species। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो endemic plant and animal species present in the biodiversity hotspot, threatened plant and animal species, तापरे protect site for conservation of nature and natural resource in various country। तो ये सब wrong statement गुड़िक। So the right statement is option 2, threatened plant and animal species। Okay, or we can say endangered plant and animal species। तो red data book कौन करे ना, red data book keeps the record of endangered animal species। Okay, so the right answer is option B, only 2। The next question, in the context of ecosystem productivity, marine upwelling zone are most important as they increase the marine productivity by bringing the nutrient to the surface। The right answer is option 2, that is again B, 2 only। Okay, ଏଠୁ ଆମର 2012 ର क्वेश्चन स्टार्ट हो गलानी। ओके, 2012 क्वेश्चन नंबर 9 देखो। with reference to the wetland of India, consider the following statements। The country's total geographical area under the category of wetland is recorded more in Gujarat as compared to the other state। बिल्कुल correct। okay, बिल्कुल correct। In India, the total geographical area of coastal wetland is larger than that of inland wetland। inland wetland means एमती wetland जार चारि साइड रे लैंड थो। ओके, मझे वाटर थो। तो ये जो स्टेटमेंट है completely wrong। So the right statement is only statement 1। So option A, 1 only correct। ओके, ऑप्शन एटा करेक्ट आंसर हमरो। Then come to the next question। Vultures, which used to be very common in Indian countryside some year age, are rarely seen nowadays। This is attributed to देखो आजिका डेट रे जो vultures गुड़िक बहुत रेयरली देखा जाउछन्ति, बहुत ही कॉमन इंडिया रे बहुत ही कॉमन, किंतु आजिका डेट रे vulture गुड़िक बहुत ही रेयरली देखा जाउछन्ति। दिस इज एट्रिब्यूटेड टू a drug used by cattle owners for treating their disease cattle। okay, देखंतु the right answer is option B। okay, किछि वर्ष तळे vulture मानकु नै गोटे रिपोर्ट बाहर छिला ना। vulture गुड़िक हेले स्कैवेंजर एनिमल। ओके, जो माने कि डेड ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करते। ओके, तो गोटे रिपोर्ट रे vulture गुड़िकर डेथ होउथिला कोथि ना किडनी फेलियर डेथ हो जाउथिला। व्हाई? बिकॉज दे ईट डेड एनिमल। ओके, आउ से एनिमल मानकु आइबुप्रोपेन, डाइसाइक्लोफेनेक ए सब पेन किलर ड्रग्स देकी ट्रीटमेंट कराउथिला। जेतेबेले से एनिमल गुड़िकर डेथ हो जाउथिला, से डेथ एनिमल मानकर प्लेस से मानकु खाइला परे ये जो vulture मानकु किडनी फेल हो जाउथिला। ओके, सो vulture आर स्कैवेंजर जो माने कि डेड ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करते। तो जदि आमे कोनोसी एनिमल को आइबुप्रोपेन बा डाइसाइक्लोफेनेक भली पेन किलर देकी आमे ट्रीटमेंट करथबा, से एनिमल जदि तार डेथ हुए, तो
तो से एनिमल को जदि भलचर खाए तेबे जाइए भलचर डेथ मध्य हो पारे ओके सो ए क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी ए ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल ओके तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement chlorofluorocarbon CFC known as ozone depleting substance are used देखंतु ये CFC ओके ये CFC टा हमर ओजोन लेयर डिप्लीटिंग एजेंट बट आल्सो आउ केते गुडे काम रे यूज करा हुए देखंतु इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर in cleaning certain electronic components as pressurizing agent in aerosol can तो ये सबू थिरे हमरो CFC यूज करा हुए ओके सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere देखो increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly rising the temperature slowly बढ़ुची because it absorb कौन absorb करे ना the right answer is option D because it absorb the infrared part of the solar radiation right so the option D is the right answer then question number 13 देखो the acidification of ocean is increasing why is this phenomenon a cause of concern देखो हमरो ओशियन रे एसिडिफिकेशन होचे जा द्वारा हमरो ओशियन रो पीएच लेवल पे जो सैलिनिटी कि हमरो जो बैलेंस टा इम्बैलेंस हो जाउचे ओके एसिडिफिकेशन बढ़िया द्वारा कौन सबू आमे ओशियन रे चेंजेस देखिया पाइबा ओके the growth of or the growth and survival of calcareous phytoplankton will be adversely affected bilkul correct the growth and survival of coral reefs will be adversely affected this is also correct the survival of some animals that have phytoplanktonic larvae will be adversely affected this is also correct the cloud seeding and formation of cloud will be adversely affected এটা তো wrong cloud সହିତ ଆମର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ तो देखंतु ओशियन रे जदि एसिडिफिकेशन अधिक मात्रा रे हुए तो कौन सब हुए ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्कारियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड तो ये सब तीन ऑप्शन जो रही पूरा कंप्लीटली करेक्ट ओके एब्सोल्युटली करेक्ट देखंतु कोरल रीफ्स आमरो ओशियन रो बा सी रो रेन फॉरेस्ट कोरल रीफ इज आल्सो नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी ओके कोरल रीफ बहुत गुडे रोल प्ले करे जेमति कि हैबिटेट प्रोवाइड करे सी एनिमल्स मानक पे फूड प्रोवाइड करे ओके तो कोरल रीफ आमरो केते प्रकार अछि तीन प्रकार बैरियर फ्रिंजिंग एटोल ओके बैरियर रीफ सी शोर रु किछि दूर रे आमे देखा पाइबा फ्रिंजिंग कोरल रीफ सी शोर को लागि कि रही थाए ओके देन एटोल ओपन सी रे फॉर्मेशन होंती जोटा कि लागून क्रिएट करंती ओके एटोल कोरल रीफ ओपन सी रे लागून फॉर्मेशन करंती राइट तो सब आमे परे देखिबा तो ए क्वेश्चन रो जो राइट आंसर टी तीन गोटी ऑप्शन so our right answer is option A that is 1 2 and 3 okay then come to the next question act and policy it a climate change upare thila ebe act and policy okay the national green tribunal act 2010 was enacted in consonance with which of the following provision of the constitution of india first statement dekhantu right to healthy environment constituted as a part of a right to life under article 21 provision of grants for raising the level of administration in the scheduled area for the welfare of scheduled tribe under the article
275 এটা তো पूरा रंग तो हमरो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एटा ओनली एनवायरनमेंट को फोकस करे ओके एनवायरनमेंट रिलेटेड जिंस पूरा फोकस करे तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट ये ऑप्शन टा करेक्ट अछि हमरो ओके सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली राइट देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखंतु हाउ डज नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए helps in protecting the Indian agriculture okay first statement NBA checks the biopiracy and protect the indigenous and traditional genetic resources absolutely correct NBA directly monitor and supervise the scientific research on genetic modification of crop plant এটা ভুল আছে then application for intellectual property right related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBA बिल्कुल correct okay ये सब genetic और biological resource ପାଇଁ approval दरकार okay then application for intellectual property ପାଇଁ ମଧ୍ୟ NBA ର approval ନିହାତି ଜରୁରୀ okay so ଆମର जो right answer है statement 1 and 3 that is option C 1 and 3 are correct okay this is incorrect then come to the next question government of India encourages the cultivation of sea buckthorn what is the importance of this plant sea buckthorn ଆମର ଗୋଟେ sea plant species okay ଏଟାକୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା it helps in controlling soil erosion and in preventing desertification okay so the right answer is option A then a particular state in India has the following characteristic it is located on the same latitude which passes through northern Rajasthan ଯଦି ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖିବା okay ରାଜସ୍ଥାନ ଏ जो latitude ଆମର ପାସ୍ ହେଉଛି ସେଇ latitude ଟା ଆଉ ଗୋଟେ state को pass କରୁଛି okay it has over 80% of its area under forest cover then over 12% of forest cover constitute protected area network in this state okay ये तीनटी जो characteristic को state रही ना the right answer is Arunachal Pradesh okay Arunachal Pradesh then come to the next question 18 number question देखो which of the following adds or add nitrogen to the soil first statement excretion of urea by animals bilkul correct burning of coal by men incorrect death of vegetation correct so हमरो excretion of urea by animal and death of vegetation ए दुटा तो ऑप्शन ठीक अछि ये जो burning of coal by men एथरु हमरो को गैस रिलीज हुए ना CO2 ओके एथरु हमरो CO2 रिलीज हुए not nitrogen okay so our right answer is option C that is 1 and 3 only then come to the next question in which of the following state is lion-tailed macaw found in its natural habitat previous video रे हमें जो Amazon related previous video रे हमें क्वेश्चन डिस्कशन करथिले सेठी मु कहिथिले आपन मानको केरला रो साइलेंट वैली नेशनल पार्क रे हमें लाइन टेल मकाउ देखिया पाइबा देन आल्सो वी हैव टू स्टेट कर्नाटक एंड तमिलनाडु रो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व रे मध्ये हमें लाइन टेल मकाउ देखिया पाइबा देन कर्नाटक रो सारावती लायन टेल मकाओ सैंक्चुरी ओके ये जो तीनटी स्टेट रे हमें लायन टेल मकाओ देखिया पाइबा ओके सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए
1 2 3 ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଦେନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁର ଆନ୍ନାମାଲାଇ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କେରଳାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାରାଭାତି ଲାଇନଟେଲ ମାକାଉ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଓକେ ଏ ତିନିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ଲାଇନଟେଲ ମାକାଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା then come to the next question this is last one which one of the following term describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन जो इकोटन इकोलॉजिकल नाइच ऊपर अछि इकोटन कोन ना इट इज द जोन ऑफ कंजक्शन बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम ओके फॉर एग्जांपल हमरो मैंग्रोव फॉरेस्ट ओके मैंग्रोव फॉरेस्ट कथा जदि कहबा दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट ecosystem between terrestrial and marine ecosystem okay terrestrial और marine ecosystem represent करे okay this mangrove forest represent ecotone between terrestrial and marine ecosystem okay तो आमर इकोटोनटा हो पारबनी हेबिटेट मध्य नुह तो ये जो क्वेश्चन रो राइट आंसर इकोलॉजिकल नाइच ओके देयर आर many kind of niche food niche habitat niche okay reproduction niche temperature niche ये सब होला हमरो niche okay तो ये जो क्वेश्चन रो राइट आंसर ता हैला इकोलॉजिकल niche okay so guys आज ପାଇଁ ଏତିକି पुणी देखा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो रे थैंक्स फॉर वाचिंग